Good morning to all. How are you? I'm fine. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, just we are going to solve different questions and different level questions from the Maxima Minima chapter, and it is the chapter sub-chapter actually, and the main chapter is application of differentiation. Okay, so this chapter is very lengthy, and I think the many more questions were already solved from this chapter, and many more questions are going to be solved. Okay, so just today's first question, just write the first questions one by one. Just we will solve this type of questions which are very very important for the board level exams and for the entrance level exams also. Okay, and for the basic concepts, for clearing the concepts, for clearing the basic concepts and the basic structured questions, we need to solve this type of questions first, and after that we will have to move to the further level, that means to the advanced level questions as well. Okay, so just write the first question, and I think in the last lecture we had solved different questions and different level questions from this Maxima Minima chapter, and the same thing is going to be happen now. The same thing and the same actually this some different level questions will be solved in this lecture. Just write. Just write. AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle. AB is the diameter of the circle. AB is the diameter of the circle. AB is the diameter of the circle, and C is any point. C is any point on the circle. Show that the area of ABC, triangle ABC, okay, is maximum when it is isosceles triangle. That means one triangle is drawn. Within the circle, and the circle diameter is the base of that triangle. Okay, so if you draw the figure just like that, this is the circle, and this is the center of the circle, and this is the diameter of the circle. Okay, now, and the diameter name is what? AB. It is given. You can see diameter of this circle. It is given, and one triangle is drawn after joining the point C, which is lying on the circumference of the circle, and the name is C. Here it is given. C is any point on the circle. Okay. Now, this length is the diameter of the circle. We can assume, because the diameter AB is the diameter of the circle, that means it is given. Okay. So this length can be assumed. Okay, twice A we can assume. Diameter of the circle twice A. Let diameter of the circle AB equals twice A unit. Okay, and the triangle is formed. Here you can see triangle is already drawn. This base of the triangle is known, but these two lengths are not known. Okay, so you can X and Y. We can assume these two lengths are X and Y. Let AC equals to X unit and BC equals to Y unit. Okay, now here according to the circle concept,
Okay, if you join the ends of the diameter and the joining lines meet at the particular point on the circle, then the angle of two lines between, that means angle of these two lines will be 90 degree. That means perpendicularly these two lines will come through the ends of the diameter. That means diameter से diameter के end कोई भी हो, diameter के end से अगर दो लाइन ऐसे निकली, अब दोनों लाइन अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर ज्वाइन हो, तो उस पॉइंट में दोनों लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट होगा. ओके, जस्ट मेक इट श्योर. सो ये 90 डिग्री है. दैट मीन्स हियर triangle ABC is right angle triangle. Sure? Okay, right angle triangle. So that means this is the hypotenuse, base, height. So according to the Pythagoras theorem, x square plus y square equals to twice a whole square. Okay, so that means x square plus y square equals to 4a square. It is the given condition. Just give the numbering. Equation number 1. Now we need to show that the area of the triangle ABC is maximum. Area of the triangle is maximum. That means this triangle, ABC triangle, the area of this triangle will be maximum. That should be proved. Okay. Now, right angle triangle area. How can I find the right angle triangle area? Just you can see half into base into height. Okay. Just write. According here, just not according here. Area A equals to half into base means x into height means y. Okay. Now at least one variable should be converted to the another one. That means the whole expression should be in one particular variable. Okay, so two variables cannot be used at a time because we need to differentiate this thing with respect to one particular variable. तो किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर मुझे डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना है, तो पूरा एक्सप्रेशन को मुझे यहाँ पर पूरा एक ही वेरिएबल के ऊपर मुझे एक ही वेरिएबल में सजाना है. यहाँ पर दो दो वेरिएबल यूज नहीं करना है. ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं. सो नाउ dA by dx equals to half into, now you can use UV x 1 by root over 4a square minus x square minus twice x. Okay, 1 by 2 root root x का डिफरेंशिएशन तो 1 by 2 root x. फिर रूट के अंदर जो x का पार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा. दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. फिर प्लस रूट ओवर 4a square minus x square and ddx of x is 1. No need to write this thing. Here this two cancel. Okay. Now dA by dx equals to half minus x square by root over 4a square minus x square plus root over 4a square minus x square. Okay. Now, if you want to solve the minimum and the maximum value, then now dA by dx equals to 0. That should be taken. Okay. So half minus x square, this 4a square minus x square plus root over 4a square minus x square equals to 0. That is minus x square फिर माइनस 4a square minus x square.
So minus x square, this minus minus cancel. So x square plus x square equals to 4s square. That means twice x square equals to 4s square. That means x square equals to twice s square. That means x equals to root 2a. X equals to what? Root 2a. Now we need to verify whether this area is maximum, okay, in this point or not. Okay, x equals to root 2a. Okay, now if you want to verify whether it is maximum or minimum at this particular point, x equals to root 2a, we need to find the double order differentiation. That means d2a by dx2. Okay, निकाल d2a by dx2 निकाल लो. So da by dx2 है ही. Now d2a by dx2 equals to हाफ तो बाहर रहेगा. यहाँ पे ये u by v फॉर्मूला यूज होगा. करो, थोड़ा लंबा होगा यहाँ पर. d2a by dx2 थोड़ा लंबा होगा. यहाँ हाफ तो पूरा बाहर रहेगा. 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ये होगा ये बाई 1/2 रूट 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लो. d2a by dx2 equals to हाफ माइनस d2a by dx2 equals to हाफ बाहर रहेगा माइनस ट्वाइस एक्स रूट 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. ये 2 कैंसिल. फिर से यहाँ पर इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स क्यूब होगा. यहाँ पर फिर से माइनस होगा. फिर एक्स क्यूब बाई रूट 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फिर 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पर भी 2 कैंसिल x बाई रूट 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ एट x इक्वल्स टू रूट 2a d2a बाई dx2. हर जगह देखो माइनस साइन है तो माइनस एक कॉमन ले सकते हैं हाफ. तो x का वैल्यू रूट 2a बिठा दो. यहां पर देखो ये 2 इंटू रूट 2a माइनस तो कॉमन ले लिया. हर जगह प्लस 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 हो जाएगा. फिर इधर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स 2s स्क्वायर. तो दैट मीन्स ये भी रूट 2a होगा माइनस रूट
2a whole cube by root 2a whole by 2a square, a माइनस प्लस होगा, फिर ये भी प्लस रूट 2a बाई रूट 2a. ओके, तो दैट मीन्स हर जगह देखो यहां पर प्लस प्लस है, अंदर सब प्लस है, बाहर माइनस साइन है, लेस देन 0 होगा. सो दैट मीन्स अल्टीमेटली यहां पर d2a बाई dx2 जो है, सो d2a बाई dx2 लेस देन 0. सो area is maximum at x equals to root 2a. So from 1 क्या था, x square plus y square equals to 4a square था. That means root 2a whole square, y square equals to 4a square. That means y square equals to 4a square minus 2a square, that is 2a square. So that is y equals to root 2a मिला. So here x equals to y equals to root 2a. तो अगर यहां पर फिगर देखो, if the values of x and y will be equal, then the length of these triangles, two sides length will be same. That means if in any triangle, if the two sides length will be equal, then what type of triangle it is? Isosceles triangle. So it is proved. So that means when the area is maximum, then x equals to y. That means the values of x and y are equal. So if the values of x and y are equal, so triangle is isosceles, and that is proved. Okay? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इफ द सम, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ if the sum of the lengths of the hypotenuse, if the sum of the lengths of hypotenuse and one side of right angle triangle is given, okay? Show that the area of the triangle is maximum. Show that area of triangle is maximum. Maximum when the angle between is, when the angle between this is pi by 3. That means one right angle triangle is there. Okay, one right angle triangle is there whose hypotenuse is something, and one side is the another line. So we can assume, let hypotenuse equals to x unit, नाम दे दो A, B, C. So AC, okay, hypotenuse means AC, x unit, and one side BC equals to y unit. According to the question, the sum of the hypotenuse and one side, that means x plus y is given. That means a is constant. a यहाँ पर constant होगा, given है ना. तो given जो भी चीज given रहेगा
वो तो कांस्टेंट ही होगा, दैट मीन्स वैल्यू विल नॉट चेंज. Okay, so if the in any other, that means any values are not changing, that means what, this value is fixed, and the fixed value is what, constant. So x plus y equals to, as it means, equation number 1. Now show that the area of the triangle is maximum. Area of the triangle is maximum. That means this part is okay. So here AB equals to, AB का लेंथ क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल है. सो AB यहां पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट ओवर बी होगा. ठीक है. So hypotenuse minus b square, that means height का वैल्यू होगा ना, that means x square minus y square. Now area of this triangle A, half into base into height, half into base into height. So here you can see two variables are being used. So we can't use these two variables at a time, because we have to differentiate this thing. So anyhow, we have to exclude at least one variable, x or y, whatever it is. Just it depends on you which variable just you are going to be exclude this. Okay. So here, if you exclude x from this part, you can exclude this x or y, whatever it is. Okay. So you can use this equation number 1, right? So here, half into y into रूट ओवर x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस वाई, a माइनस वाई, राइट. ठीक है. सो नाउ it is your a. So now you can differentiate with respect to y. Here you can see no x is there. Okay. So now dA by dy. Now dA by dy. अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में सब कुछ निकालने के बाद, मैक्सिमम बुक्सिमम दिखाने के बाद, व्हेन द एंगल बिटवीन दिस इज पाई बाई 3, मींस दिस एंगल इज पाई बाई 3, ये प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है. जब एरिया यहां पर मैक्सिमम होगा. ओके. नाउ अब a मिल गया, dA बाई dy. नाउ dA by dy equals to half y 1 by 2 root a minus y whole square minus y square, a minus y whole square minus y square into रूट के अंदर जो टर्म है उसका करना है कि नहीं. सो 2 इंटू ए माइनस वाई माइनस 1 माइनस 2i वाई, ये है फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन. ओके. अब सेकेंड पार्ट का करें तो रूट ओवर ए माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन तो 1 ही है बस. ठीक है. अब dA बाई dy इक्वल्स टू हाफ y बाई 2 रूट a माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इधर एक माइनस दोनों तरफ से कॉमन आता है, माइनस. ठीक है. ओके. माइनस कॉमन आता है तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा यहां पर 2a माइनस 2y. ओके. यहां पर तो माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, दैट मीन्स 2 माइनस 2i
प्लस ट्वाइस वाई, है कि नहीं। माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, दैट मीन्स ये ओके। तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो जाएगा, है तो प्लस होने से प्लस ट्वाइस वाई, ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस वाई। फिर इधर रहेगा रूट ओवर ए माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह डी ए बाई डी वाई। यहां पर ये 2y कैंसिल। फिर डी ए बाई डी वाई इक्वल्स टू हाफ, ये 2 कैंसिल, तो माइनस ए वाई बाई रूट ओवर ए माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस, कैलकुलेशन थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद डी ए बाई डी वाई को हम लोग को क्या करना है, इक्वल्स टू 0। नाउ डी ए बाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ये तो हर टाइम लेना है आपको। मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है तब एक्चुअली दिस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सो नाउ यहां पर माइनस ए वाई बाई रूट ओवर ए माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर ए माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई इक्वल्स टू ए माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डायगोनल मल्टीप्लाई, ओके। नाउ तो ए वाई इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये वाई स्क्वायर कैंसिल, फिर 3ay इक्वल्स टू एस स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पर ये ए कैंसिल, y इक्वल्स टू a by 3, y equals to what, a by 3, you can see y equals to a by 3 हो गया, हाँ। नाउ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन d2a by dy2 निकालना है आपको, है कि नहीं, d2a by dy2 निकालना है। सो नाउ ये वैल्यू आप रखे साइड में, ठीक है। अब नाउ d2a by dy2 सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो एज इट इज सेम है, u by v फॉर्मूला, यहां पर ये सेम यूज करना है। फिर y का वैल्यू पुट करना है, ठीक है, y का वैल्यू पुट करना है। y का वैल्यू पुट करने के बाद देखना है कि d2a by dy2 का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, है कि नहीं। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। सेम चीज जो है हर जगह, तो एक ही चीज, द सेम थिंग इज एक्चुअली इज हैपनिंग, ओके। सो दैट मीन्स ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन u by v formula and then this root formula will be used, and after that the value of y will have to be put here, okay. Now after that, after putting this value of y, the whole answer will be less than 0, okay. So if the answer is less than 0, then what, this area a, because the differentiation is taken taken for the area actually a, da by dy with respect to y, ओके। तो अगर आप यहां पर a का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहां पर a मतलब क्या है, एरिया होता है, तो एरिया का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकल रहा है। अब रेट ऑफ चेंज सेकंड ऑर्डर, दैट मीन्स डबल रेट ऑफ चेंज अगर यहां पर लेस देन 0 निकला, तो दैट मीन्स ये मैक्सिमम होगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो दैट मीन्स यहां पर सब कुछ करने के बाद लेस देन 0 आएगा, ये कैलकुलेशन आप कर लो, ठीक है। कर पाएंगे, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बोलना, तो मैं कर दूंगा।
d2a by dy2 less than 0. So area is maximum at किस पॉइंट में, y equals to a by 3. तो अगर यहां पर from 1 तो यहां पर अगर ये y equals to a by 3 निकला, सो x प्लस y इक्वल्स टू क्या था, a था, है कि नहीं? तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू a माइनस a बाई 3. तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2a बाई 3. ठीक है, 2a बाई 3. अब मुझे यहां पर एंगल जो है पाई बाई 3 दिखाना है. नाउ for triangle ABC. Now for triangle ABC क्या था, ट्राइंगल ऐसा था, है कि नहीं? सो मैंने हाइपोटेन्यूज और बेस कंसीडर किया था. दैट मीन्स ये एंगल cos थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस. हाइपोटेन्यूज मैंने क्या एज्यूम किया था, y by x. सो दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू y का वैल्यू मिला a by 3 और x का वैल्यू मिला 2a by 3. 3 कैंसिल, a कैंसिल. दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू हाफ. हाफ को हम लोग cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 60 degree. That means theta equals to pi by 3. So that means angle is pi by 3. It is proved. Okay. So every question that you can see, every question the same thing is happening, the same structured questions, and actually this the solution pattern is same. Okay. Now next question. Show that the surface area of the closed cuboid with square base. Okay. Just write the next question. Very important question. Closed cuboid. That means ऊपर का ये जो पोर्शन है वो क्लोज्ड है, बंद है. That means कोई भी चीज अगर बंद है, that means उसका एरिया काउंट होगा. अगर ये ओपन बॉक्स होता, that means what? ये टॉप पोर्शन का जो पार्ट है उसका एरिया काउंट नहीं करना पड़ता यहां पर. ठीक है. So that means यहां पर question number 3. Show that the surface area of the closed cuboid. Show that the surface area of closed cuboid. That means closed cuboid. Okay. Closed cuboid with square base. That means the base is square shape. Base is what? Square. That means just like this. This is the square shape. That means the rhombus shape. Okay. So if you draw this type of just like that. Okay. So that means this base part is square base. That means the length and the breadth will be same. That means this length and breadth are same, but the height will be different. Cuboid shape है ना, cuboid shape होने से तो जैसे डस्टर होता है, डस्टर का ये जो दोनों पोर्शन होता है ना वो क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है. ठीक है. बट लंबा जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए जो लंबा ऐसे निकल जाता है, डस्टर शेप निकलता है. दैट मींस क्यूबॉइड शेप निकल जाता है. सो दैट मींस ये हाइट जो है उसको हम लोग वाई जूम कर लेते हैं. ठीक है. स्क्वायर बेस है, दैट मींस लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगा. सो स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम एंड गिवन वॉल्यूम
these are all given. Is minimum. Minimum किसको दिखाना है? सरफेस एरिया को दिखाना है. और क्या क्या गिवन है? स्क्वायर बेस गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है. ओके, सो इज मिनिमम when it is cube. When it is cube. That means before solving these things, we don't know whether it is cube or not. Okay, so at first we need to solve that the surface area of this closed cuboid with something, some given parts are there, is minimum. At first we need to solve these things. Okay, so here base length equals to x and base breadth equals to x and height equals to y unit, right? given volume, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. गिवन v इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स x स्क्वायर y. सो v इक्वल्स टू x स्क्वायर y which is given equation number 1. ये given है, given volume, that means v is constant here, right? मैंने बोला था whatever is given in the question that will be constant, that will be fixed. Okay, so that means this v is constant here. Volume is given, that means volume को मैंने v नाम दिया है यहाँ पर, तो v constant होगा, है कि नहीं? So आपको क्या दिखाना है? सरफेस एरिया. Here सरफेस एरिया a नाम दे देते हैं. a equals to क्या होता है? क्लोज्ड क्यूबॉइड है, that means this part is closed, that means this portion area should be counted. Okay, so if this part, this top part would be opened, okay, then this open, that means this top portion area not needed to be counted. Okay, so अगर ओपन होता तो यहां पर आपको एरिया काउंट करना जरूरत नहीं था. ये हम लोग करेंगे. ओपन बॉक्स, ओपन टॉप इज ओपन, यहां पर क्लोज्ड है, दैट मींस दिस पोर्शन एरिया शुड बी काउंटेड. ओके, तो कोई भी चीज क्लोज्ड है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का ही तो हम लोग एरिया निकाल पाते हैं ना. ओपन होने से तो एरिया नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर. सो दैट मींस ये क्लोज्ड होने से, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड क्यूबॉइड बोला गया, दैट मींस एरिया आपको कंसीडर यहाँ पर करना है. तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड के एरिया कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला जानते हैं. टोटल सरफेस एरिया, दैट मींस 2 into length into breadth, length into breadth, breadth into height, फिर height into length, just like that. Okay, so that means a equals to 2x square plus twice xy. So that means a equals to twice x square plus 4xy. So it is the area. So here you can see two variables are being used. So at least one variable should be excluded from this part using this equation number 1. Okay, तो equation number 1 से अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखो तो a equals to twice x square plus 4 into x into y. y की जगह v by x square, v by x square यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन लिख के रखो. यहां पर सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, ठीक है? तो a equals to twice x square plus, यहां पर ये x कैंसल, 4v by x, 4v by x. Now dA by dx, because the whole expression is being converted into the form of x. So that means 2 into twice x plus 4v minus 1 by x square. Okay? So that means dA by dx equals to 4x minus 4v by x square. So
dA by dx equals to 0. Usually, just generally, we need to take these things. Other than that, we couldn't get the values of x here. Okay, so 4x minus 4b by x square equals to what? 0. That means 4x equals to 4b by x square. यहाँ पर 4 cancel. X cube equals to b. That means x equals to b to the power 1 by 3. ये होता है x का value. Okay. So after getting this x value, what do we need to find? We need to find the double order differentiation. Okay. So double order differentiation. Now dx of again dA by dx equals to ये होता है dA by dx. So that means 4 minus 4b minus 2 by x cube. ठीक है. So that means d2a by dx2 equals to 4 minus minus plus यहाँ पर 8b by x cube. Okay. So whatever the value of x is going to be put here, the whole answer will be positive. Here you can see at x equals to b to the power 1 by 3. x का value भी तो यहाँ पर positive ही है ना. So d2a by dx2 इस पॉइंट में x का वैल्यू जो पॉजिटिव है ना, यहां पर भी तो सब पॉजिटिव वैल्यू इसी 4 प्लस 8b बाई x क्यूब है ना. दैट मीन्स v होगा, v भी कैंसिल. दैट मीन्स 12 ग्रेटर देन 0. सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स व्हाट? मिनिमम. सो व्हाट इज द मिनिमम हियर? दैट मीन्स दिस एरिया, because we are differentiating, we are dealing with this area, surface area of this cuboid. So that's why the surface area is minimum at the point x equals to b to the power 1 by 3. So just write the statement. So surface area is minimum. So surface area is minimum at x equals to b to the power 1 by 3. Okay? हो गया. नाउ इक्वेशन नंबर 1 क्या था? इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 y का वैल्यू निकालना है ना. फ्रॉम 1 v इक्वल्स टू x स्क्वायर y था. दैट मीन्स v इक्वल्स टू x स्क्वायर, दैट मीन्स v टू द पावर 1 by 3 होल स्क्वायर इनटू y. y का वैल्यू क्या होता है वो निकाल देते हैं. सो v इक्वल्स टू दिस v टू द पावर 2 by 3 इनटू y. That means v equals to, sorry, यहाँ पर y equals to v to the power 1 by 3 ही होगा. So यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x और y का वैल्यू सेम आ रहा है. So x equals to y equals to v to the power 1 by 3. So if the values of x and y are equal, that means what? What is x here? Length and breadth. And y is what? Height. So when this length, breadth and height will be equal? When the figure will be cube. क्यूब का ही तो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है. तो यहां पर लेंथ ब्रेथ तो x ही है. हाइट मैंने y एज्यूम किया था. यहां पर y का वैल्यू भी x के साथ इक्वल आ रहा है. दैट मींस लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल आ रहा है. सो एरिया इज मिनिमम व्हेन इट इज व्हाट? क्यूब. Proved. Okay, these are all very important and very interesting questions also. Okay, फिर देखो, ये अभी करेंगे ये ओपन टैंक वाला. ओपन, दैट मीन्स दिस टॉप पोर्शन इज ओपन हियर. ओके, एन ओपन टैंक विद द स्क्वायर बेस, एन ओपन टैंक विथ स्क्वायर बेस. फिगर इस तरह ही होगा. ओके, एन ओपन टैंक विद द स्क्वायर बेस
an open tank with square base and vertical side is to be constructed, and vertical sides are to be constructed from a metal sheet, from a metal sheet. So as to hold the given quantity of water, the given quantity of water, given quantity, so that the cost of material will be least, so that cost of material will be least when the depth is half of its width. The same pattern question it is, but the one basic difference is there. In the last question, the top portion was closed, but in this part, in this question, the top portion is open. Open tank. That means this top portion is open here. So that means the area of this top part not need to be counted here. Okay. So that means the surface area will be found, but this top portion area will be excluded from this total surface area because this top portion is open here. So this part is open, but rest of the things are same. Okay, the square base, here you can see square base, that means x, and the depth means height is y here. So just you can write the part here, let length equals to x equals to breadth, height equals to y unit. क्या given है यहाँ पर? This is constructed from a metal sheet. That means this carved, this side portion. Okay, this means the side part of this cube is being constructed by using this metal sheet. Okay, so that means this metal sheet will be used less when the area will be less. जितना एरिया कम होगा उतना ही तो मेटल शीट कम यूज होगा, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां पर देखो ये लाइन थोड़ा नोटिस करो, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, किसी भी कंटेनर जो है, कंटेनर के अंदर अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर गिवन है, क्वांटिटी ऑफ वाटर मीन्स व्हाट? वॉल्यूम, एम आई राइट? वाटर का क्वांटिटी एक कंटेनर में कैसे काउंट होता है? वॉल्यूम से काउंट होता है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम इज गिवन, डायरेक्टली इट वाज गिवन, बट इन दिस पार्ट इनडायरेक्टली इट इज गिवन. ओके, वाटर क्वांटिटी इज गिवन, दैट मीन्स व्हाट? वॉल्यूम इज गिवन. दिस कंटेनर वॉल्यूम इज गिवन, दैट मीन्स दिस cuboid container volume is given, given quantity of water, that means V is given. Show that the cost of the material will be least, that means cost of the material will be least. material जितना भी यूज होगा उसका कॉस्टिंग जो होगा मिनिमम होगा. लिस्ट कब मिनिमम होगा? जब material जितना कम यूज होगा उतना कॉस्टिंग यूज होगा, कॉस्टिंग कम यूज होगा, है कि नहीं? मटेरियल तुम जितना कम यूज करोगे उतना ही तो खर्च कम होगा. तो मटेरियल कब कम यूज होता है? जब एरिया कम होता है कि नहीं? क्योंकि एरिया ही तो आपने कवर किया है ना मेटल शीट से, राइट?
सो इंडायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस जो है थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया है, बट अल्टीमेट क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि नहीं? तो बस ये लिस्ट दिखाना है, दैट मीन्स आपको एरिया को लिस्ट दिखाना है। अब एरिया लिस्ट हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो मटेरियल भी मिनिमम यूज होगा। मटेरियल अगर मिनिमम यूज होगा, कॉस्टिंग भी मिनिमम ही होगा, है कि नहीं? ओके, सो गिवन, ये तो ओपन बॉक्स है, v इक्वल्स टू वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम यहां पर विल नॉट चेंज। ओके, सो एक्स स्क्वायर वाई, इट इज इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ओपन बॉक्स, अच्छा ठीक है। तो S इक्वल्स टू सरफेस एरिया, S इक्वल्स टू एरिया क्या था, क्लोज्ड पार्ट का एरिया क्या था, थोड़ा याद करो, क्लोज्ड पार्ट का एरिया क्या था कुछ देर पहले जो हम लोगों ने किया है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, है कि नहीं? तो यहां पर ट्वाइस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4xy होगा। एक्स स्क्वायर सिर्फ इस पोर्शन का ही एरिया काउंट होगा, एक्स स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका तो होगा नहीं, ओपन बॉक्स है तो टॉप पोर्शन खुला है, दैट मीन्स ये टॉप पार्ट का एरिया यहां पर काउंट नहीं होगा। तो बेस पार्ट का एरिया एक्स स्क्वायर, ऊपर का पार्ट का एरिया एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलाएंगे तो 2x स्क्वायर था, बट यहां पर तो ओपन बॉक्स है तो ऊपर का पार्ट का एरिया माइनस हो जाएगा। सो ट्वाइस एक्स स्क्वायर से ओनली एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, प्लस 4x स्क्वायर। साइड वाला पार्ट तो एज इट इज सेम रहेगा, है कि नहीं? साइड वाला तो यहाँ पर कुछ, सो s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू सेम चीज, y मीन्स एक्स v बाई एक्स स्क्वायर, v बाई एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये एक्स का s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स। नाउ the same thing will be happened, ds by dx and the d2s by dx2, and everything will be same. Now ds by dx equals to twice x minus 4v by x square. So ds by dx equals to 0, that means twice x minus 4v by x square equals to 0. So twice x equals to 4v by x square, that means ये तो 2 है, ये x cube equals to twice v, x cube equals to twice v, that means x equals to 2v to the power 1 by 3। ठीक है, अब डबल ऑर्डर निकाल लो, डबल ऑर्डर निकाल लो। Now d2s by dx2, d2s by dx2 equals to 2 minus 4b minus 2 by x cube, that means d2s by dx2 equals to 2 plus 8v by x cube। Now at x equals to 2v to the power 1 by 3, आपको क्या दिखाना है, एरिया को मिनिमम दिखाना है, जिससे कॉस्टिंग भी मिनिमम आ जाए, मटेरियल भी मिनिमम यूज हो। तो d2s by dx2 देख के तो लग ही रहा है यहां पर ये मिनिमम ही होगा, तो 2 plus 8v by 2v to the power 1 by 3 होल क्यूब तो है, दैट मींस ग्रेटर देन 0 ही आएगा, देख के तो लग ही रहा है ग्रेटर देन 0 आएगा। v तो कांस्टेंट ही है, v कांस्टेंट है, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट मींस वॉल्यूम इज गिवन, दैट मींस v is constant here, so greater than 0। okay, so if the second order differentiation is greater than 0, then what, area s is what, minimum at x equals 2v whole to the power 1 by 3। ठीक है, so v equals to x square y था, so that means v equals to x square, that means 2v to the power 1 by 3, 2 by 3 हो जाएगा into y,
y का वैल्यू क्या निकलता है देख लो, y का वैल्यू क्या है, थोड़ा निकाल लो यहां से। सो y इक्वल्स टू v बाई 2 to the power 2/3 v to the power 2/3. So y equals to v one minus 2/3 by 2 to the power 2/3. Means y equals to v to the power 1/3 और इधर 2 to the power 2/3. तो यहां पर मुझे प्रूफ क्या करना है, डेप्थ इज हाफ ऑफ द विड्थ, डेप्थ जो है वो हाफ ऑफ द विड्थ है कि नहीं। सो यहां पर देखो x क्या था, 2v to the power 1/3 है कि नहीं। सो देखो तो depth is half of the width, half of the width. v to the power 1/3 2v to the power 1/3, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो कैलकुलेशन करने से देखो यही चीज आता है यहाँ पर है। सो दैट मीन्स y इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या है x, तो ये क्या है डेप्थ है, और हाफ ऑफ ये x क्या है विड्थ है। सो यहां पर लिखो, सो सरफेस एरिया इज मिनिमम, दैट मीन्स material cost is minimum when depth is half of width. ठीक है, यही तो स्टेटमेंट है, हो गया। यहां पर जस्ट इस चीज को हम लोगों ने थोड़ा सजा के लिख लिया, ठीक है, थोड़ा देखो सेम ही चीज आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है कि नहीं, तो बराबर डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए दिस द मोर एंड मोर टाइम इज बीइंग यूज्ड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली दिस 4 or 5 क्वेश्चंस आर पॉसिबल टू सॉल्व इन वन लेक्चर। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियोस, इफ यू लाइक माई लेक्चर्स, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल for better experiencing, because if this type of questions are being solved in the class actually, then I think it will be very much useful and it will be very much fruitful for your better preparation, okay, for the board exams. Okay, so I think you need to solve this type of questions for getting more and more common questions, and for the better experiencing and for actually for getting the good marks and good result in your board exams as well as in your entrance exams also. Okay, so thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.